अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to do exercise multiple choice question which is on page number 72 and 73 of your textbook. So starting from the first one, which is atoms react with each other because. So atoms react because they want to attain stability, they want to attain electronic configuration same as noble gases. An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by. तो अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा गेन करेगा, और चूंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. Consider the electronic configuration of atom. Which atom with the given atomic number will be the most stable one? So it is atomic number 10, which is for neon, a noble gas. Octet rule is the attaining of 8 electrons in the last shell is octet rule. Transfer of electron between atoms result in, तो ये ionic bonding की definition में यही था, complete transfer of electrons from one atom to another atom. When an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is. तो चूंकि electronegative element negative ion बनाएगा, electropositive element positive ion बनाएगा, तो ion formation is in ionic bonding. A bond formed between two non-metals is expected to be. तो non-metals के दरमियान में bonding by mutual sharing which is covalent. A bond pair in covalent molecule usually has. तो चूंकि pair है, it will have 2 electrons. Which of the following compound is not directional in its bonding? So it is B, KBr, because it is an ionic compound. और ionic compounds never show any polarity, क्योंकि इनके दरमियान already positive and negative ions हैं जो अपनी जगह पर fixed हैं, so overall compound neutral होता है. Ice floats on water because water is more denser than ice. Covalent bond involves the sharing of electrons. How many covalent bond does C2H2 molecules have? Now this is a tricky one. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम आंसर कैन बी 3 और 2. लेकिन इस वक्त क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स, दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर, नॉट अबाउट द टाइप. तो C2H2 कुछ इस तरह से. So it have 3 covalent bonds between carbon atoms, one covalent bond here with hydrogen and the other one here with another hydrogen. So total of 5 covalent bonds. They are not asking about the type, इसीलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा. It is the number which is 5 in number. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और एक पेयर में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी हैव टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. Which pair of the molecules has same type of covalent bond? So same type of covalent bond is between oxygen and C2H4. Both have double covalent bond. Here we have a double and a single covalent bond, double and triple covalent bond, double and triple covalent bond, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा. उन्होंने कहा जिस पेयर के सेम कोवलेंट बॉन्ड है, तो सेम इज इन C. Identify the compound which is not soluble in water. तो हमने ionic compounds में पढ़ा था, all the ionic compounds are soluble in water. So we have NaCl an ionic compound, KBr an ionic compound, magnesium chloride an ionic compound. So all of these are soluble in water. Only benzene C6H6 is not soluble in water. Which one of the following is an electron deficient molecule? तो हमने सिर्फ एक ही electron deficient molecule study किया है, which is BF3. Identify which pair has polar covalent bond. So it is H2O, water and HCl. क्योंकि इन्हीं के दरमियान आपने डिटेल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी और पोलैरिटी भी डिस्कस की है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. Which one of the following is the weakest force among the atoms? तो एटम्स में सबसे वीक फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है, C. So for today we discussed the total of 18 MCQs. Mark these on your book. And that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.